Good morning students. In our extra questions, I will tell you question number 3 what is given. First of all, some application of trigonometry, some extra questions where in last class we just discussed about question number 1 and 2 where the object are just opposite to the one horizontal line. अगर मैं एक horizontal line के according बात करूँ तो अपने पास में जो objects थे वो क्या थे, just opposite to each other. In this what we have to do, in question number third, there is given the angle of elevation theta of the top of the lighthouse as seen by a person on the ground is such that tan theta equals to 5 upon 12. When the person moves a distance 240 meter towards the lighthouse, the angle of elevation become phi such that tan theta equals tan phi equals to 3 upon 4. Find the height of the lighthouse. Okay, in this given figure you have seen here PM is the height of the lighthouse. Let this height as h meter. An object at the point O, एक object है अपने पास observer at point O, he moves towards the lighthouse. From the point O, the angle of elevation, अगर मैं इस point से बात करूँ तो angle of elevation यहाँ पे कितना है theta. When an object is moved towards the lighthouse 240 meter, then the angle of elevation get changed as phi. Now the distance between these 2 points, let which is x meter, and the height of the lighthouse take as h meter. Okay, from this given question, the diagram, how can you prepare? H is the height of the lighthouse from the point O, which is some distance far away from the lighthouse. The angle of elevation get theta degree, and then 240 meter a person moves towards the lighthouse, the angle of theta angle get changed as phi at the top of lighthouse. The distance between these 2 points as x meter and the entire height of the lighthouse as h meter. There is given the value of theta is not given here. There is given tan theta is equals to 5 upon 12 and tan phi which is equals to 3 upon 4. How can you solve this question? Look this side. Here this is your given diagram. First of all you have to mention in the solution, you have to mention all the things line by line. How can you mention? PM is the height of the lighthouse. Okay, now from the point O, observer make an angle of elevation at the top of the lighthouse. यहाँ से यहाँ तक top of the lighthouse, the angle of elevation is 30 as theta. An object moves towards the lighthouse. ये कितना move कर रहा है? 240 meter towards the lighthouse, and then angle of elevation change as phi. Now the entire height of the lighthouse as h meter. Now distance between these 2 points, the remaining from the O dash to the foot of the tower या foot of the lighthouse की अगर मैं बात करूँ that is x meter. Clear? तो चलो अपन इसको वापस से एक बार सॉल्व करते हैं पूरे पोर्शन को. Now first of all, in some application of trigonometry you know about the relationship between distance and height. Height and distance के बीच में अगर मैं relation के विषय पर बात करूँ तो अपने पास में क्या था? Perpendicular and base. Perpendicular and base which is considered to tan theta. So here tan theta and tan phi is given already. Now first of all, in two right angle triangle we have solution. In triangle PMO, in triangle PMO, for the base angle there is given base angle as theta, then tan theta is equals to perpendicular upon base, that is perpendicular upon base. Tan, the value of theta, here theta we don't know what value of theta, which is equals to perpendicular, the height is h meter, this is h, and what is your base? Base O to M. O to M, the distance base as OM, that is ये entire length कितनी हो जाएगी अपने पास में x plus 240 meter. Can I take in this way? So entire length is x plus 240. Clear to you? Now tan theta, the value of tan theta, this is given as 5 upon 12. ये value कितनी है अपने पास में 5 upon 12, which is equals to h upon x plus 240. What you have to do? You have to cross multiply this term. X plus 240 multiplied by 5 is equals to 12h. Okay, can I say this is your equation number 1? Okay sir, this is your equation number 1. Now in the second right angle triangle, in triangle PMO dash,
M O dash. ये अपने पास में सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल है. Here PM is your perpendicular and O dash M is your base. Now you know very well tan. Here the base angle is phi. Then you have to place here tan phi, which is equals to perpendicular. Perpendicular as PM. And what is your base? Here base O dash M. Now tan phi, the value of tan phi, that is given 3 upon 4. Place here 3 upon 4 is equals to PM. The value of PM is H and O dash M, that length as X. यहाँ से O dash से लेके M तक की लेंथ कितनी थी अपने पास में X. That's why we place here X. What you have to do now? You have to cross multiply these two terms. जैसे cross multiply करोगे 3x is equals to 4m. 4h. Can I say this is your equation number second? From the equation number 1 and 2, can I get the value of x and y? Now you have to simplify first this term. Like here is given 4m. Can I place the value of h here? 4 in multiply, shift another side, then it should be in divide. Then 3x upon 4. Put the value of h in equation number first. When you place the value of h in equation number first, तो कितना आ जाएगा? Here 5 into x plus 240 is equals to 12 into the value of h 3x upon 4. 3x upon 4. Now 4 simplify with this 12. What is y? What value is considered? 3. 3 3s are 9. 9x. Here 5x plus 240 into 5. Okay. Now 5x move, shift another side, then it should be in subtraction. 9x है यहाँ पे 5x पॉजिटिव साइड में, इस साइड में शिफ्ट होगा तो नेगेटिव. Then 240 into 5 is equals to 9x minus 5. 9x minus 5x. The value as 4x. This is equals to 240 into 5. The value of x, which is equals to 240 into 5 divided by 4. Now 4 cancel out 24. 6 times. This is 60. 6 5s are 30 and remaining 0 as 0. 600 meter. The length as x, जो remaining height है O dash 0.2 m. ये कितना है length? This is as 300 meter. The remaining height between foot of the lighthouse from this given point, जो 240 मीटर आगे शिफ्ट होने के बाद में जो आया था अपने पास में लैंड, that is 300 meter. But we have to calculate height of the lighthouse. We no need to calculate the distance he moves toward, he remaining distance towards to move for the lighthouse. मेरे को इसको इस तरफ मुड़ने जाने के लिए कोई डिस्टेंस ही कैलकुलेट नहीं करनी, मेरे को तो क्या कैलकुलेट करनी है? हाइट ऑफ द lighthouse. For this, in put the value of x 300 in equation number second. Put the value of x equals to 300 meter into equation number second. मैं equation number second में जैसे इसकी वैल्यू प्लेस करूंगा क्या आ जाएगा यहाँ पे? Now 3 into 300 is equals to 4h. Look this side. यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है अपने पास? Here x is equals to 300. Place here 3 into x. 3 into 300, which is equals to 4h. The value of h is equals to 3 into 300 upon 4. When you simplify this term, 300 is cancel out. 3 into 25. 3 into 25. Now 9 multiplied by 25, the term is 225 meter. So height of the lighthouse, here I can say the height of the lighthouse, this is 225 meter. Clear to everyone? Once again, look this side. What is the question? PM is the height of the lighthouse from a point O
angle as theta. An observer observe the angle of elevation theta at the top of the lighthouse. Observer move towards the lighthouse. Observer moves towards the lighthouse. How much distance? 240 meter. Then the entire angle of elevation is phi. And the remaining distance between these 2 points let as x meter, and the height of the lighthouse take as h meter. In two right angle triangle, because we have to use trigonometric ratio, trigonometric ratios का use करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, trigonometric ratios की value calculate कर सकता हूँ in triangle PMO. Here PMO, this is your right angle triangle. For first right angle triangle, tan theta equals to perpendicular upon base, the value of perpendicular h, and the remaining distance from this point to this point is x, and 240, the addition of these two terms x plus 240. Now 5 upon 12 equals to h upon x plus 240. Cross multiply this term. Can I say this is your equation number 1? तो मैंने इसको equation number 1 consider कर लिया. Now here for this right angle triangle PMO dash, PMO dash के लिए क्या हो जाएगा, tan phi equals to PM upon O dash m. So h upon x is equals to 3 upon 4. Cross multiply किया, the value of h is equals to 3x upon 4. Now can I put the value of h from this equation into equation number first? जैसे ही मैंने equation number 1 में इसकी value place की तो कितना हो जाएगा? Here 5x plus 240 remaining as 5x plus 240 is equals to 12 into the value of h 3x upon 4. Place here 3x upon 4, 4 is cancelled out by 12. Then यहाँ पे कितना आ जाएगा 3. Now 3 3s are 9. 5x shift another side. Then 240 into 5, which is equals to 9x minus 5x. Okay, simplify किया, the value of x is equals to 300. You know the distance between these 2 points is 300, but we have to calculate the height of the lighthouse. So what you have to do, x is equals to 300, put in the equation number second. When you place the value of x is equals to 300 in the equation number second, then what is considered? 3 into 300, which is equals to 4h. When you simplify this term, h is equals to 3 into 300 upon 4. 4 cancel out by 300. How many times? 3 into 25 times. 3 3s are 9 here, and 25 remaining as 25. 9 into 25 is 225 meter, and the height of the lighthouse is 225 meter. Why this question is so important? Because there the angle of theta and phi is not given to you. The value of tan theta and tan phi is given to you. That's why this question is important. Clear? Okay. After this, we are going for our next question. What is your next question? Okay. This is your new next question. The angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above the surface okay, there is given the angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above the surface of a lake is 30 degree, and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of the lake. Look this side. ये मैंने एक डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है यहाँ पे. What is given in this question? This is really important question. ये लास्ट अल्टरनेट ईयर्स में आ रहा है. लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में. लास्ट ईयर सॉरी, शायद ये हो सकता है ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग आप समझ लेना. ओके, नाउ सपोज करो ये अपने पास में लेक का ये लेक है. ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबाउ द सरफेस ऑफ द लेक. ये 60 मीटर अबाउ लेक है, अपने पास में कोई पॉइंट है. फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, नाउ दैट पर्सन इज लुकिंग फॉर द क्लाउड. तो यहां पे मान लो अपना क्लाउड है. ओके, ये क्लाउड है और मैं यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा हूं इस क्लाउड के टॉप पे. देन दैट एंगल इज, ये आपकी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन. सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दैट इज गिवन एज 30 डिग्री. ये आपको कितना गिवन है, 30 डिग्री. दिस इज क्लियर टू यू. नाउ द एंटायर हाइट फ्रॉम द लेक, दिस इज योर लेक. ओके, एंड डिस्टेंस हाइट फ्रॉम this height is 60 meter, this height is 60 meter, and the remaining height we'll add this height as h meter. Okay, the reflection of this cloud into the water,
द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस क्लाउड इनटू द वाटर, ये किस अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रहा है? रिफ्लेक्शन आ जाएगा अपने पास में एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन एट द रिफ्लेक्शन, तो अपने पास में ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ आपको? 60 डिग्री. लुक दिस साइड वंस अगेन. फ्रॉम दिस लेक 60 मीटर अबव ऑब्जेक्ट मीन्स P पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट एक क्लाउड को देख रहा है. ओके, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से कितना है? दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लेवल, दैट्स व्हाई यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस क्लाउड इनटू द वाटर, रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इनटू द वाटर h प्लस 60 मीटर, तो ये रिमेनिंग हाइट क्लाउड की कितनी हो जाएगी? h प्लस 60 मीटर. व्हाई दिस height as h plus 60 meter? because of if you are in front of a plane mirror. देखना मेरी बात समझना, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होता है इन वाटर में, देन वाटर रिएक्ट एज लाइक प्लेन मिरर. व्हाट इज प्लेन मिरर? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर? लुक दिस साइड. ये लेक किसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगी? ये लेक अपने पास में प्लेन मिरर के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करेगी. दिस इज योर सरफेस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सरफेस. जैसे ही लाइट इस पे आएगी तो प्लेन मिरर में क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंसिडेंट मींस लाइट रे आती है तो वो सेम यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो सेम लेंथ डाउन साइड में आएगी या नहीं आएगी? नॉर्मली जनरल वे में मैं बताता हूँ. जैसे अब मैं किसी फ्रंट एक प्लेन मिरर के फ्रंट में खड़ा हूँ. ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम माई साइड फ्रॉम द प्लेन मिरर, और जो मेरा रिफ्लेक्शन होगा प्लेन मिरर के अंदर, दैट डिस्टेंस बिटवीन द इमेज टू द प्लेन मिरर आर सेम. दोनों डिस्टेंस क्या होंगी? सेम. आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 10th चैप्टर में फ्रॉम इन 10th क्लास चैप्टर नंबर 10 इन साइंस, देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. आपके पास में प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है. इन दैट पोर्शन आपको क्या गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट किसी भी प्लेन मिरर से कुछ डिस्टेंस पे h मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, तो सेम उसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा मींस जिसकी इमेज बनेगी वो भी कितनी होगी? h मीटर. इन दिस पर्टिकुलर केस ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर 60 मीटर हाई अबव एक ऑब्जेक्ट किसी क्लाउड के टॉप पे देख रहा है, देन इसका रिमेनिंग हाइट कितनी है अपने पास? h. देन एंटायर हाइट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस कितना हो गया? h प्लस 60, एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट गोज डाउनवर्ड, तो इतना रिफ्लेक्शन सेम टू सेम उतनी डिस्टेंस डाउन में आ जाएगा. कितना हो जाएगा? h प्लस 60. द एंगल ऑफ डिप्रेशन नाउ एट दिस पॉइंट इज 60 डिग्री. दिस क्वेश्चन विद दिस डायग्राम, लेट मी एक्सप्लेन यू. दिस इज द सरफेस ऑफ द लेक. ये क्या अपने पास में? लेक हो गई अपने पास में. ओके, नाउ एक ऑब्जेक्ट था OA, कितना है? 60 मीटर. ये 60 मीटर हाइट पे था. फ्रॉम दिस पॉइंट देयर इज योर क्लाउड, ये आपका क्लाउड है. फ्रॉम दिस एंगल ऑफ एलिवेशन कितना भाई? 30 डिग्री. सर ने कितना मेंशन किया यहाँ पे? 30 डिग्री. ओके सर, आपने भी 30 डिग्री मेंशन कर दिया. सो दिस एंगल इज 30 डिग्री. एंड व्हेन द रिफ्लेक्शन मेक इनसाइड द लेक, द हाइट फ्रॉम दिस लेक, ये सरफेस एरिया से इसकी हाइट कितनी हो जाएगी अपने पास में? x प्लस 60. बिकॉज यहाँ पे जो हाइट है ये कितनी है? 60, एंड रिमेनिंग ये हाइट इसने कितनी कंसिडर की है? जो भी कंसिडर की हो, मैं इस हाइट को क्या कंसिडर कर रहा हूँ? h. नाउ दिस हाइट एज 60, सो टोटल हाइट ऑफ दिस अबाउ द सरफेस ऑफ द लेक, सरफेस ऑफ द लेक के ऊपर अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? 60 प्लस h, एंड रिमेनिंग हाइट एज 60 प्लस h इनसाइड द वाटर. दिस इज द ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर. क्लियर टू यू? सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? लुक दिस साइड. सबसे पहले अपन को सारा जो इस क्वेश्चन में गिवन है वो सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. हियर AM is the surface of the lake. At the point A, the angle of the height, entire height of this object is 60 meter. From the 60 meter above the lake, the observer observe a cloud. तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ गया? क्लाउड आ गया. ओके, तो ये यहाँ पे आपका क्या है? क्लाउड. ओके, एट हियर द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है अपने पास में? ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री. एंड द एंटायर हाइट ऑफ दिस पोर्शन, इस पूरी क्या है? एंटायर हाइट कितनी हो जाएगी? ये हाइट तो अपने पास में कितनी हो गई? 60 मीटर, एंड द रिमेनिंग हाइट लेट एज h मीटर. सो इनसाइड ऑफ द वाटर द रिमेनिंग हाइट, ये हाइट कितनी हो जाएगी अपने पास? h प्लस 60. क्लियर? सो हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? वी हैव टू लुक फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स. हमारे पास में हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करना है. सो वी आर going for right angle triangle. We have two right angle triangle, first and second. Okay, so how can you solve?
देखो बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली क्यों आता है, क्योंकि इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा है कि ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के अबाउ जो हाइट होगी और वही डिस्टेंस नीचे जब वाटर के इनसाइड बनेगी तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, उसमें भी उतनी लेंथ होगी. दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज सो इम्पॉर्टेंट. दिस हाइट है 60 मीटर. ओके, एंड the height of the cloud from this point let as h meter. फिगर में कुछ भी गिवन होगा, ये मैंने h मीटर कंसिडर कर लिया. एंड दिस लेंथ एज यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 60 मीटर. एंड ये जो लेंथ है इतनी, ये कितनी हो जाएगी, ये टोटल एंटायर हाइट कितनी हो जाएगी h प्लस 60. तो ये भी कितना हो जाएगा h प्लस 60. टेक एज h प्लस 60. We are having two right angle triangle over here in triangle. First, what is the right angle triangle here? OMP. OMP. Where is your base angle? Base angle is O. Base angle अपने पास में क्या है O. Then tan angle value as POM. POM is equals to height PM. This is your perpendicular upon base. The value of perpendicular here PM upon OM. PM upon OM. Now you know tan, the value of angle POM. POM कितना अपने पास में 30 डिग्री. Place here 30 डिग्री. Now PM, the value of PM here H and OM O2M. इस लेंथ को मेरे पास में है नहीं, इसको मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं h. ओके, ये क्या कंसिडर कर लिया मैंने x मीटर. सो प्लेस हियर दिस इज एज x. नाउ tan 30 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x. द वैल्यू ऑफ h रूट 3 इज इक्वल्स टू x. कैन आई से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1? डेफिनेटली सर, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी अपने पास में. नाउ इन अनदर राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OP dash M. OP dash M. How can you solve? Here for the base angle O. For the base angle O यहाँ पे कितना आ रहा है अपने पास, ये बेस एंगल कितना है 60. तो इसके लिए बात करूंगा for tan angle P dash O M. This is P dash O M is equals to perpendicular upon base. Again the value of perpendicular here, this is your perpendicular and this is your base, because this is your base angle. अगर मैं बात करूँ तो ये आपका क्या हो गया, base angle हो गया अपने पास में. and this is your work as base and this is your perpendicular. तो perpendicular कितना हो जाएगा अपने पास में, ये लेंथ कितनी ली थी मैंने, ये तो है अपने पास में सर h प्लस 60 एंड ये रिमेनिंग हाइट कितनी है 60. तो एंटायर हाइट, अगर मैं एंटायर लेंथ की बात करूँ तो पिंक कलर ले लेते हैं. तो एंटायर लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 120 प्लस h. बिकॉज ये हाइट कितनी है 60, ये हाइट कितनी है h प्लस 60, दोनों का एडिशन हो जाएगा. तो एंटायर हाइट इनसाइड द जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसके लिए एंटायर हाइट कितनी हो जाएगी 120 प्लस h. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, देयर परपेंडिकुलर एज 120 प्लस 120 plus h divided by x. The value of angle tan कितना अपने पास में 60 डिग्री. The value of tan 60 कितना होता है अपने पास में √3. This is equals to √3 is equals to 120 plus h upon x. Now cross multiply. X √3 is equals to 120 plus h. Can I say this is your equation number 2? From equation number 1 can I place the value of h here? कैसे यहाँ पे मैं h की वैल्यू इसमें प्लेस कर दूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा h √3 into √3 is equals to 120 plus h. ओके, कैसे आया, यहाँ से h की वैल्यू क्या प्लेस की मैंने, द वैल्यू ऑफ x हियर h √3 प्लेस ओवर हियर. द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने x की वैल्यू कितनी हो जाएगी h √3. व्हेन यू मल्टीप्लाई h √3 बाई √3 हियर 3h इज इक्वल्स टू 120 प्लस h. h शिफ्ट अनदर साइन, देन 3h minus h is equals to 120. Now 2h is equals to 120. The value of h is equals to 120 upon 2 कितना आ जाएगा 60 मीटर.
द रिमेनिंग हाइट, ये रिमेनिंग हाइट कितनी आ रही है अपने पास में 60 मीटर. फॉर द पर्टिकुलर केस व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक. सरफेस ऑफ द लेक से, यहाँ से इस सरफेस ऑफ द लेक मीन्स यहाँ पे जो आपका क्लाउड था इसकी इस सरफेस ऑफ द लेक, इस लेक तक के लिए क्या आ रही होगी हाइट, ये कितना आया h here 60, h is equals to 60 मीटर एंड रिमेनिंग हाइट, ये रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, ये 60 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 120 मीटर. क्लियर टू यू? ओके, दिस इज योर होल सॉल्यूशन. द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक इज 120 meter. Okay, after this we are going for next question. What is your next question? A boy standing on a horizontal plane. Find a bird flying at the distance of, एक सेकेंड मैं कर देता हूँ इसको वापस से. Yes, a boy standing on a horizontal plane finds a bird flying at a distance of 100 meter from him at an elevation of 30 degree. A girl standing on the roof of 20 meter high building find the angle of elevation of the same bird to be 45 degree. Both the boy and girl are on the opposite side of the bird. Find the distance of the bird from the girl. Look this side. Here at the point P there is a girl. Okay, sorry, there is a bird. यहाँ पे क्या अपने पास में bird है. ये अपने पास में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है. इन दिस एक ऑब्जर्वर तो है O पॉइंट पे एंड अ गर्ल विद द हाइट ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से यहाँ से इस बर्ड को ऑब्जर्व कर रही है. सो हियर योर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है अपने पास में 45 डिग्री एंड फ्रॉम दिस पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है अपने पास में 30 डिग्री. दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन. द एंटायर हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम दिस, देखो इसमें जो एंटायर हाइट क्या दे रखा है 20 मीटर हाई बिल्डिंग. देखो यहाँ पे मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ. बॉय स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन. हियर इज योर बॉय finds a bird flying at the distance of 100 meter from him. The distance from this object to this, ये लास्ट ईयर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है. ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट एट द टॉप ऑफ द बर्ड द लेंथ एज 100 मीटर. A girl standing on the roof of 20 meter high building find the angle of elevation of the same bird to be 45 degree. यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है अपने पास में 45 डिग्री. बोथ द बॉय एंड गर्ल आर द अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड. दिस देयर इज योर बर्ड एंड अपोजिट साइड हियर एंड हियर गर्ल एंड बॉय दोनों है अपने पास में स्टैंडिंग. नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल. मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, मीन्स ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करके बतानी है. लेट दिस डिस्टेंस एज x. ओके, हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? लुक दिस साइड. नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए अपन. हियर इज योर फिगर. नाउ वी आर हैविंग टू राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, फर्स्ट वन, इसको थोड़ा सा ढंग से समझ रहा हूं. PMO इज योर राइट एंगल ट्रायंगल. हियर इज योर एंगल 90 डिग्री एंड नेक्स्ट PM'O', ये अपने पास में क्या हो गया हियर, ये तो अपने पास में हो गया पॉइंट P, ये हो जाएगा O' एंड M. हियर इज राइट एंगल और here M' is also right angle. So we are having two right angle triangle OMP and next one PM'O'. Okay, how can you solve? Look this side. In triangle PMO, in triangle PMO, this is your right angle triangle. PM upon OM is equals to 10, the value as 30 degree. But we have, wait, we have to calculate height. So how can you calculate the height? Because मेरे पास में ये 100 मीटर है, मेरे को कैलकुलेट करना है, ये लेंथ कैलकुलेट करनी है. तो how can you calculate this thing? First of all, हम लोग 10 यूज नहीं कर रहे हैं इसमें. ओके, आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो. गिवन में क्या था, मुझे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल. गर्ल से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. तो जैसे OPM के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आएगा साइन 30 डिग्री
because for this particular angle 30 degree sin क्यों यूज कर रहा हूँ, because of we know perpendicular upon hypotenuse. Here this is your perpendicular and this is your hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse, the value of perpendicular over here we don't know. Take as this length, entire length pm ही रहने दो इसको, and upon hypotenuse 100 sin 30 1 upon 2, simplify किया pm is equals to 50 meter. 100 2p pm, when 2 shift another side then 100 divided by 2, then कितना आ जाएगा 50 m. तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई अपने पास, एंटायर 50 मीटर. At the height of 20 meter above the ground level, the girl is standing here. So यहाँ पे remaining height p से लेके m dash की height कितनी हो जाएगी, 50 minus 20, then this is 30 meter. So in right angle triangle कौन सा हो जाएगा, p m dash o dash, p m dash o dash क्या हो जाएगा, p m dash upon p o dash, because we have to find out the length of this point, take as x meter. So p o dash which is equals to perpendicular upon hypotenuse, once again sin थीटा, साइन कितना है अपने पास 45 डिग्री, द वैल्यू एज 45, साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2. हियर पी एम डैश कितना अपने पास 30 अपॉन पी ओ डैश, द वैल्यू ऑफ पी ओ डैश इज x, देन 30 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3, द वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, 1 upon root 2. The value of x is equals to 30 root 2 meter. So the distance of the bird from that girl is 30 root 2 meter. This is your answer. Clear to everyone? After this we are having, okay, for today this is over now. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ अपन को, वापस से एक बार देखना हो तो, ओके, यहाँ पे आ गया अपने पास में यस, इन द फर्स्ट स्लाइड देयर इज गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा एंड फाई, दो अलग अलग एंगल दिए हुए थे, इसके लिए अपन ने कैलकुलेट किया. आफ्टर दिस सेकेंड वन, ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया. नेक्स्ट आफ्टर दिस ये अपने पास में आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन के अकॉर्डिंग अपन ने इसको सॉल्व किया. नाउ ये अपने पास में क्लाउड के लिए था, एंड नेक्स्ट ये अपने पास में बॉय स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, लुक एट द हाइट ऑफ द बर्ड. ठीक है, फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द गर्ल टू द बर्ड. ओके, थैंक यू क्लास.